So it feels really good meeting you for the first time. है ना? Yeah, myself also. काफ़ी कुछ जानना है, काफ़ी कुछ कोशिश करूंगा आपको पहचानने का आज अपने शो के माध्यम से और My कोशिश करूंगा pleasure, कि my pleasure. राइट. So why not start from the very childhood? Like, could you please elaborate on the same? I was a normal child. I mean, it was very used to kind of child. I was like that. I mean, very shy, very introvert, and very much homely. I never used to go outside. I was just inside the home. We made a childhood, and it was very normal, like any other child. There was nothing very big for me, and I was always shy at my earlier life. I mean, when I was young. So that how it grows. It went on, चलता गया, and then finally सब कुछ जब कॉलेज के हमने ज्वाइन किया उसके बाद से देन changes started. Early life was a boring life. I remember myself. I had no friends at that point of time. I was completely inside my house. You did your schooling in Siliguri itself? Yeah, I was in the Don Bosco school. But still, every child is not the same. So I was a very quiet and very shy child. 10 तक तो ऐसे ही चला. Okay. And then college life started. So what was the change that you you found inside you after you joined the college? It was not college also. I mean, I just did my 10th, 12th from Margaret School only. Okay. And then I was a shy as usual, a normal child, and I was very quiet and very silent. Most of my works basically at that time. And then at one point of time when I enrolled myself to designing, and after doing my first year in college, then slightly I tried to mix with people, and things changed on from there. Okay. But till class 12 I was a very normal and a very shy boy, and incident of coming into fashion was quite different. I mean, it was not planned. I was more into creativity. I was more into sketching. I was more into doing art and crafts in my earlier life. But फैशन करूँगा ऐसा कोई प्लान नहीं था. फैशन एक क्वाइट कोइंसिडेंटल एक ये हो गया था. इट वाज नॉट प्लान्ड एट ऑल. Even in my case, my photography as a career was not planned. Okay. It came out coincidentally. But then मुझे लगता है कि अगर हमारे हृदय में, दिल के अंदर में अगर वो आर्टिस्ट है, जैसे कि आप में भी था, you were engaged in different forms of creative works, right? तो कोई भी एक क्रिएटिव वर्क को पकड़ के हम अगर करियर में आगे बढ़े तो अच्छा ही होता है. आप भी कितना अच्छा कर रहे हैं. नहीं, वो तो एक्चुअली देखो, वो हम लोग जिस लाइन पे हम लोग क्रिएटिविटी का बात करते हैं, हमारे ज़माने में देयर वाज नो गाइडेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. देखिए, कोई गाइडेंस मिले या फिर आपको सही रास्ता दिखाए स्कूल कॉलेज में, स्कूल के टीचर्स आपको गाइड करें, ऐसा कुछ भी नहीं था. वी वर वेरी मच काइंड ऑफ क्रिएटिविटी है तो मतलब स्केचिंग करता है तो क्रिएटिव है, इतना ही है. आप म्यूजिक में है तो तबला बजा लेगा, गिटार बजा लेगा, म्यूजिक स्कूल में भर्ती होगा. बट इससे क्या करियर बन सकता है, ये कोई क्लैरिटी नहीं था उस टाइम पे. क्लैरिटी बहुत मुश्किल से एक आध जन को ही हुआ होता होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट बच्चे क्रिएटिव तो तभी है, अभी भी है, लेकिन उसको डायरेक्शन दिखाने वाला बहुत कम लोग था उस टाइम पे. चाहे फोटोग्राफी हो जाए, चाहे डिजाइनिंग हो जाए. मैं भी रिलेट कर सकता हूँ. इवन आई बिलोंग टू, बहुत प्रॉब्लम हुआ था. आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल प्लेस, लाइक इट्स 21 kilometers ahead of Kalimpong. Okay. The place is named Pedong, and it's a small village in fact. सेम चीज था ना हमारे साथ में भी. किसी ने भी क्रिएटिव फील्ड में भी आगे किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, हमें किसी ने बताया ही नहीं. करियर बन सकता है, ये कोई आइडिया ही नहीं था. और जैसे दिन बीतते गई, अपना अकल खुलते गया, अपने आप को जैसे ग्रेजुअली. वही मेरे लाइफ में भी वैसा ही हुआ था कि मैंने जब शुरू किया था, जैसे कॉलेज तक मैं बहुत शाई था. फिर मैं तो एक्चुअली जाना चाहता था दूसरे प्रोफेशन में. मुझे, अगर मैं इसका प्रीवियस हिस्ट्री बताऊं, आई वॉज मोर इन टू इवेंट, वॉचिंग इवेंट्स. पहले दूरदर्शन एक चैनल हुआ करता था, तो दूरदर्शन वॉज क्वाइट इन एवरी हाउस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. पब्लिक चैनल्स, जो प्राइवेट चैनल्स आजकल है, वो सब नहीं होता था. सो दूरदर्शन में आई वॉज वेरी ईगरली वेटिंग फॉर द होल ईयर टू वॉच वन सीरियल, वन इवेंट, दैट्स फिल्म फेयर.
अच्छा। दूरदर्शन में फिल्म फेयर आता था उस टाइम, जनरली ईयर के एंड में आता था, तो साल में वो एक ही बार आता था, और अगर आपने मिस किया तो मिस कर गए, वो दोबारा आपको DD2 में आता था जो दिल्ली में आता था। तो हम लोग DD1 में हम लोगों का एरिया आता था, सिलीगुड़ी या फिर वट एवर एरिया, DD1 में आता था। तो DD1 में एक ही बार फिल्म फेयर आता था। तो आई वॉज सो मच काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड कि मुझे वो देखना ही है कैसे भी करके। So what I used to do, I remember still now, and make myself fun out of it. I'm talking about 89, 90, 90s में. So it was continuous process, not only 89. I used to see from long time, 85, 86, 87, 88. So साल में एक ही बार आता था वो। फिर ऐसा तैयारी कर लेता था कि I was just constant watching television constantly. I never used to move for one single minute. कि बीच में पहले इतना एड्स नहीं आता था दूरदर्शन में, आता था तो पता चल जाता था 2-3 एड्स होगा फिर वापस आ जाएगा, तो वो 2-3 एड्स मैं मिस ना करूं। मैं वीडियो देखने के लिए वो बाथरूम जाना होता, तो आई नेवर यूज्ड टू, आई जस्ट कॉन्स्टेंटली वेट एंड वॉच एंड सी वॉट एवर गोइंग ऑन। सो आई वॉज वेरी मच एडिक्टेड टू दैट। बट ये एक करियर बन सकता था तब, nobody knew about it in North Bengal basically. फिर क्या हुआ कि like gradually वो events में मेरे को बहुत attract करता था, and then everybody would make me kind of क्या देख रहा है ये, कोई serial ना sports देखता है ना कुछ देखता है, खाली फिल्म फेयर जब आता है he is very active in watching that, and बाकी तो टाइम देखता नहीं। यार उस टाइम में there was like a competition between Sridevi and Madhuri Dixit. Okay. Yes, so I was a fan of Sridevi, and my elder brother was a fan of Madhuri Dixit. My family was fan of Madhuri. So I was very, as I said, I was very shy, but you know, I was voting for Sridevi, but somehow Madhuri won at that point of time. So there was always a clash going on. So this happened in my earlier days. So somehow that was one thing which always ignited me to do something related to something like that. Designing was, actually I say designing was not my cup of tea. So gradually क्या हुआ, it was 96, 97 most probably, तब फैशन डिजाइनिंग का एक थोड़ा सा आया है मार्केट में। फैशन डिजाइनिंग में थोड़ा सा, सिलीगुड़ी में कुछ नहीं था, तो आई वेंट टू वन ऑफ द बिगर कॉलेज इन Calcutta. I cleared up my entrance examination, but still, you know, there's always a back door going. There are limited seats, so I couldn't make it, and my father was not there at that point of time. So I was kind of how to pay the fees, how to do that. It was a big question for me, and it's in lakhs at that point of time. So हुआ नहीं था, तो suddenly एक दिन मैं मूवी देख के आ रहा था सिलीगुड़ी से। एक हॉल है यहाँ पे, अभी नहीं है, तो उसमें एक फिल्म था अफलातून। So with my brother, I went there and watched the film, and he used to call to his girlfriend in Pune. तो तब STD होता था, तब जनरली मोबाइल्स तो नहीं था, तो एक कॉमन प्लेस है मार्केट में जहाँ पे वो करता था। तो हम लोग मूवी देख के घर वापस आ रहे थे, रात के 9:30-10 हो गया था, and then he started calling his girlfriend, and I was waiting outside. So I was just looking here and then, and suddenly my eyes went onto the banner out there, fashion designing INIFD. So I was so excited. ये INIFD का तो मैंने देख लिया था कि कैलकाटा में है, एडमिशंस चल रहा था, and suddenly when you see that small flex or banner at that time, so I was so excited. The next day morning at 8:30 I went there. I was waiting outside the door. मुझे पूछना है क्या है कैसा है। तो suddenly 10:30 तक एक लेडी आई, एंड शी जस्ट ओपन द डोर। आई सेड कि मैं ऐसा पूछताछ करने आया हूँ, इंक्वायर करना। तो when she opened the door and I went inside, and then I found there's nothing. There was not even a chair to sit. It was under construction. So that lady got very kind of, you know, confused कि क्या करें इनको। So I said, I just want to take admission. You tell me what is the procedure. And she didn't have anything. So she said me like, do one thing, come in December. So I said, can I not take admission right now? So well, you can see the organization, it is under construction. There is nothing out there. How can I take your admission? So I said, okay, fine, give me a call. This is my landline number. Okay. So this was the incident story. And then from there, when the institution organized, and then suddenly she gave me a call in one morning, and then
I went there and I took the missions, and then it started gradually. So within the first batch, there were a huge amount of students at that point of time. I'm talking about 97 most probably. Right. There were almost 35 students, girls, and I was the only male child. It was designing. और मेरे को करना है. सही है. मेरे को लगा कि लाइक डिजाइनिंग करने से ही शायद वो चीज़ जो मैं फिल्म फेयर ये सब देखता था, इवेंट्स, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. लेकिन मेरा स्केचिंग अच्छा था, बाकी लोगों के शायद उनके कंपैरिजन में मेरा स्केचिंग अच्छा था. तो क्या हुआ कि लाइक टीचर मेरे को प्रेज करता था, एंड टीचर जब it is a more personalized curriculum. Right. Designing is nothing like anything related to giving you lectures and samajh jayega. You have to sketch, you have to draw, you have to make things more into pen and paper, and you have to brush up your skills. So as my sketching was good enough, and then what happened is the teacher used to say, okay Kuntanil, you just try and help her. So aise karte within 3 months I started teaching my batchmates only. So that's how it started off. And then it went on and went on. Within 6 months, I got a placement in one of the institution called Arena Multimedia. So though being a designing student, I started working because, I was always, as I said, we don't come from a very big family. We were a big family at times. After my father's death, everything went on back. Let me not discuss all those things right now. So I started collecting money for my fees and all. So I started going for sketching classes, doing whatever coming my own way related to designing, drawing and creativity. तो करने लगा करते finally I used to give the fee struck to the institution and all, and then gradually one fine day one person said that the management is going to shut down INIFD. Oh my God. So now what? Because as this was a new curriculum, ना आपको समझने में ही बहुत टाइम लगता है. सही बात है. अगर आपको फोटोग्राफी आता है, आपकी टीम को तब आप गाइड करोगे जब आपको नॉलेज है. सही बात. आपको नॉलेज नहीं है, आप कैसे अपने टीम को गाइड करो. वैसे ही हुआ था, INIFD खोल तो लिया था उन लोगों ने, लेकिन चलाने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो नहीं था. तो बहुत लोग आए चले गए, फैकल्टीज आए चले गए, तो एक constant कुछ नहीं हो रहा था. तो they were fed up because the faculty problem was the kind of thing which was creating a lot of internal negativity spread कर रहा था. और they were quite good family background holders. So उन लोगों को वो बहुत उनके पर्सनल लाइफ में चला जा रहा था कि ये क्या खोल दिया और इससे उन लोगों का पर्सनल लाइफ. तो उन लोगों ने डिसाइड कर लिया बंद करना है. तो जहाँ पे मैं काम कर रहा था अरीना मल्टीमीडिया, उनके जो ओनर थे, तो he said me, Kuntanil, there's something for you. If you are there, then I can think about it. I said, what? So he said, like, I'm planning to take this institution provided you are there. Oh. So I said, who else? I can't give you money. You pay me just a very less amount of money, which is 2,500. How can I be a partner? Well, you don't have to do anything. You just say that you are doing it. Right. So I am always happy to do all these things. So he took along with 2 more peoples out there. One has become a very close brother to me right now. Though Mr. Sharma is no more involved into this, but yes, Vinod Mishra, who is one of the partner. So we were all, struggling up with that institution, and they said me, we are taking it, you run. So I was hardly 19 or 20 at that point of time. So it was a big challenge for me. Yeah. But remember one thing that, if you love something with your heart, from the inner core, then things become different. You see it in a different way. So I'm talking about 2000. In 2000, that institution had come to my place. I become the center manager at that point of time. So it started from then. So I remember it's been long time now. It's been 23 years almost. Yeah, almost. So changes didn't happen one day. Right. What I did in 2000 was kind of, I was खुद ही मैं matured, मेरा knowledge इतना ही है, और मैंने एक center so much of learning and struggle. So like, gradually, it's not struggle. Involved. See, my struggle, I never say it's struggle in that point of view, because I have always kind of, enjoyed that part. मेरा 20 साल कैसे चला गया, मुझे आज भी मैं realize करता हूँ, मुझे वो पता नहीं कैसे चला गया वो. और gradually मैंने upgrade किया. देखो एक मार्केट में जब कुछ भी नहीं है, आप उसमें एक चीज इंट्रोड्यूस करना चाहते हो जो कि बहुत एक
क्या बोलूँ, जनरल नहीं है, दैट वाज नॉट नॉर्मल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Doing a graduation from a normal college, might be going into medicine, being a doctor or engineer was very common at that point of time. But being a designer or starting up a designing curriculum was very challenging. It was very challenging. In 2000 it was very challenging. But मैंने शुरू किया था वही 10-15 स्टूडेंट से शायद, लेकिन करते मुझे पता चल गया कि मुझे इन लोगों को अच्छे से अच्छा चीज़ देना है जो मैंने नहीं रिसीव किया था, तो क्या करें. और ऐसा कुछ भी नहीं था. कैलकाटा वॉज क्वाइट फार टू अस दैट पॉइंट ऑफ टाइम. प्लस this photography events, these were not there. It was not there. It was completely blank. No, even like I'm very much younger to you, but then even around 2012-13 I couldn't find anything as such out here in town कि इस चीज को लेके भी आगे बढ़ा जा सकता है, करियर बन सकता है, एक प्रोफेशन बन सकता है. बिल्कुल भी नहीं था. सही बात. So I'm talking about 2000. Okay. तो उस टाइम में तो लाइक कुछ भी नहीं था. तो शुरू करना और उसको चलाना और उसको ग्रेजुअली थोड़ा प्रमोशन करना, उसका करियर का ऑब्जेक्टिव्स लोगों के सामने लेके आना was very tough at that point of time. But yes, I enjoyed every moment. I never kind of felt that, I am doing a lot of jaddojahad to make it kind of running around here and there to make it up market. No, I didn't do anything. I always did one thing, was I tried to upgrade my way of seeing that. मैं किस तरीके से उसको अपने तरफ से अपग्रेड करूँ ताकि स्टूडेंट्स जो मुझे पूछे मैं उनको वो आंसर दे पाऊँ, और वो जो आज दे रहा हूँ कल उसका दूसरा कुछ दूँ. सही बात. इस तरीके से मैंने अपने आप को अपग्रेड किया. तो मैंने जो बोला अभी, कैलकाटा वाज क्वाइट फार. फ्लाइट्स वर वेरी एक्सपेंसिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. फ्लाइट वर नॉट वेरी इजी. आज कैलकाटा इज वेरी इजी टू गो कनेक्ट एंड ऑल. सोशल मीडिया इज देयर, बट दैट टाइम नथिंग वाज देयर. सो टू गेट कनेक्टेड विद समबडी वाज वेरी डिफिकल्ट. और सारा चीज कैलकाटा में था. हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल था, इट वाज कैलकाटा. कुछ भी लाओ तो कैलकाटा से आना चाहिए. There is nothing, the infrastructure was not ready. So gradually, one by one, I started. So one day, after teaching them, one day in the month of November, there was one small offer coming from one organization, one hotel, that, there's a 31st night. So do you want to do the fashion show out there? I said, yeah, I want to do, but मन में पूछ रहा था कि मॉडल्स कौन होंगे. Because Siliguri में there are nothing. सही बात. So they said me, आपको ही सब कुछ अरेंज करना है, आपको ही सब कुछ तैयार करना है, बट it's an event of 31st night, so आपको देखना है, एंटरटेनमेंट होना चाहिए. बिकॉज फैशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि ठीक नहीं है बोलना, बट येस अभी भी फैशन को दो तरीके से देखा जाता है. एक तरीका है एंटरटेनमेंट, दूसरा तरीका है सीरियसनेस. आप कौन उसको एंटरटेनमेंट की तरफ से देख रहा है, कौन उसको सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, ये जज करना बहुत मुश्किल है. तो सिलीगुड़ी में उस टाइम तो वो एंटरटेनमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में ही देखा जा रहा था. अभी भी होता है, ऐसा नहीं है. भले मैं कितना भी एजुकेशन करा लूँ, ये करा लूँ, देखने का नजरिया वाज मोर ऑफ एंटरटेनमेंट. एंड दैट पर्सन वाज वेरी क्लियर, मुझे 31st नाइट करना है जहाँ पे देयर वुड बी अल्कोहल, पीपल डांसिंग, दिस दैट. सो आई सेड yeah, I would do, but I didn't say him how I would do. So I then started up finding how to do that. Though it's a first time project for me, but how to do that. So from there I started the other side of designing. I mean, because एक design industry दो चीज से चलता है, एक है डिजाइनिंग, दूसरे है मॉडलिंग, फैशन मॉडलिंग. सो अब मॉडल्स कैसे जुगाड़ करूँ, तो मैंने कोशिश किया था कैलकाटा से बुलाने के लिए, लेकिन इट वाज सो प्राइसी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दे डिडंट पे मी दैट मच, तो हाउ डू आई पे देम. सो मैंने कोशिश किया कि सिलीगुड़ी से जो मुझे पसंद आ रहा था आसपास से उन लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया. एक आध जन को बुला लिया, चलो देखो ऐसा ऐसा है. तो मेरे कभी छत पे कर लिया, म्यूजिक सिस्टम कुछ नहीं था, डीजे कुछ नहीं था, तो विद कैसेट एंड रिकॉर्ड्स एंड वी स्टार्टेड दैट. सो somehow that show got good response from the audience, and they never knew that it was all based from Siliguri. Amazing. So that was when I realized कि डिजाइनिंग अकेला नहीं चल सकता है. डिजाइनिंग को अगर हमें प्रमोट करना है, साथ साथ मॉडलिंग का इंडस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज वन इंडस्ट्री इज नॉट कम्प्लीटली सफिशिएंट विदाउट द अदर पार्ट ऑफ इट. राइट. यू कैन नॉट रन. एग्जैक्टली. सो तब मुझे मॉडलिंग का इंटरेस्ट आया कि आई हैव टू डू दिस वन. और तब मॉडल्स
का जो प्रोफेशन है what was not taken seriously, though it is not taken seriously still now in small town like सिलीगुड़ी, but मेट्रोज में बड़े शहरों में ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है. सिलीगुड़ी में उस टाइम में मॉडलिंग वाज अ काइंड ऑफ बिग टाइम स्टोरी, सपना देखने वाला बात होता था. तो मुझे, मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे जो जिसको पसंद आता था बाय एनी, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग, मार पीट खाने का कोई डर नहीं था. मैं जाके पूछ तो लूँ, मैं तो उसके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ. तो पूछा तो कोई हाँ किया, कोई ना किया, कोई तो उसको बोले मम्मी को बोल देंगे, कोई डर गया. सो थिंग्स हैपन लाइक दैट. सो बट येस, आई गॉट 4 or 5 पीपल्स एंड देन आई स्टार्टेड. अब उस टाइम में वापस एक चीज, सोशल नेटवर्किंग वाज नॉट देयर, television was not there. So there was one channel, but FTV was there. So I used to somehow get connected to that FTV and get some knowledge from there and try to synchronize that with my own ideas and try to groom them, whatever knowledge I had. And this way it started off 1 year, 2 year, and then gradually I found that these boys and girls are doing real nice. I mean, they're doing good. So I made it a point, no, I cannot do it right this way right now. I have to be more organized. I have to be more mature in doing it because I just can't fool around with people. Right. Because ये भी एक इंडस्ट्री बन रहा है. सही बात. आप कितने देर तक उसको गेम अपने दिमाग से चलाओगे? आप अगर पहली दफे कर रहे हैं और आप ही अगर चूकते हैं तो फिर इसका फ्यूचर फिर और खराब हो सकता है. और मैंने कभी भी, मेरा अपने जिंदगी में इतने सालों में मैंने कभी किसी को गलत नहीं सजेशंस दिया. अगर उनको देख के कोई मॉडल्स बनना चाह रहा था तो मैंने पहले देखा उसका हाइट है कि नहीं. जी. फर्स्ट थिंग ऑफ बीइंग अ मॉडल शुड बी अ गुड हाइट. यू शुड हैव अ गुड हाइट. यू शुड हैव अ गुड अपीलिंग बॉडी तो खैर फिर भी ठीक किया जाता है, लेकिन हाइट इज द प्राइमरी थिंग व्हिच यू नीड टू कम फॉर. सो आई ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन इन माय एकेडमिक्स. चाहे वो डिजाइनिंग हो, चाहे वो मॉडल्स हो. तो मैंने बहुत सोच समझ के ही लोगों को सिलेक्ट किया. और by God's grace, after 1 or 2 years, most of them went to Bangalore, some went to Bombay, some went to Calcutta to work. They took it seriously because the grooming was very perfect. I can assume that. So that was the starting phase. I mean, it started off in 2002, something like that. So where I started doing it way more seriously. तो तब के टाइम में मुझे और भी एक चीज शेयर करना है कि like music was not a part at that point. There was no DJ at that point of time. 2002 में DJ was. There was one gentleman I remember. He was the senior most person in music in Siliguri. His name was DJ Bombay. Okay. I still remember because it was more connected to Bombay. So DJ Bombay. It was though his nickname for public appearance. Okay. So he used to come with 2 different set of boxes. And he used to pay 1 CD up and 1 CD down, 1 CD up, and with equalizer he used to maintain that. And that was the DJ at that point of time. So this was the system. So I'm talking way back to around 2000. 2002. Yeah. So then gradually the market start understanding what DJ is, DJ क्या होता है, DJ का function क्या है. Then काफ़ी लोग DJing में interest हुआ. 2004-5 में हमने बहुत सारे DJs देखा. It started getting popularized. So ये market को, इस industry को तैयार करने में बहुत time लग गया. मैंने महीना नहीं, बहुत सारा साल लग गया. मतलब I'm talking about 4 or 5 years. ऐसे ही चलता गया चीज़. आहिस्ता आहिस्ता एक concept में चेंज होते आज का सिलीगुड़ी बना. आज सिलीगुड़ी इज मोर ऑर्गेनाइज्ड. सिलीगुड़ी इज मोर एक्नॉलेज्ड और विद देयर experiences. They're seeing experiences. They've grown up. Their visions. This is what is fashion show. This is what is music. This is what is photography. So Siliguri industry is gradually growing. But yes, again, the whole infrastructure, if you see, the entertainment industry, the designing industry, the industry which you belong, the music industry, so they all connected towards each other. And you cannot groom everybody. They should have that interest of grooming themselves. Inside them. शुरुआत हम नहीं करा. शुरुआत हम नहीं किया. हम जबरदस्ती किसी को डीजे नहीं बना सकते. उसका म्यूजिक सेंस हमने तो उस टाइम अपना काम निकाल लिया था, लेकिन वो पर्पस नहीं था. इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है. मेरा बैकग्राउंड डिज़ाइनिंग का था. मैंने अपने आप को डिज़ाइनिंग में ग्रूमिंग करके सीख के पढ़ के, लेकिन म्यूजिक वॉज नॉट माई फोटे. photography was not my forte. Makeup was not my forte.
then acting was not my forte. So ये सारे इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए सिलीगुड़ी में we should have government coming up and helping us some or the other way. Otherwise the industry is there but will not function properly. Exactly. आज इंडस्ट्री तो है, नाम का है, लेकिन आप बताओ मेरे को इस इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनलिज्म कहाँ तक है? आप कर रहे हो ठीक है, हम कर रहे हैं ठीक है, दूसरे शायद उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। और सिलीगुड़ी क्योंकि बहुत छोटा जगह है, या फिर अभी सीखने में ही लगे हैं, सब एक्सपीरियंसेस बटोरने में, और उनको शायद ये रियलाइज भी नहीं होता है कि ये एक चूक हो जा रही है। हाँ, प्रॉब्लम यही यहाँ पर आ रहा है कि लाइक आजकल के जनरेशन हमने 20 साल खो दिया जी इस इंडस्ट्री को तैयार करने में। आई स्पेंड 23 इयर्स, बट आज के बच्चों को अभी बनना अभी चाहिए। आज मुझे सपना आया कि मुझे डिजाइनिंग करना है, कल मुझे डिजाइनर बनना है। किसी को सपना है फोटोग्राफी करना है, कल उसने फोटोग्राफी खरीद लिया, परसों फोटोग्राफर बन गया सोशल मीडिया में। किसी को मॉडलिंग करना है, आज एक शो कहीं पे पार्टिसिपेट किया, कल वो शी एस्टैब्लिश हरसेल्फ दैट शी इज अ मॉडल। ऐसे नहीं होता। The seriousness, the study behind. You have to have that basic knowledge. Why are you here? What have you learned? Just if you say in Facebook through social media ki I'm a designer or I'm a model or I'm a photographer or I'm this and that, it will not stand for long run. You're making fool of yourself. So today's generation is so fast that I say they just random one things, immediate things, सब कुछ अचानक से चाहिए, शॉर्टकट में चाहिए, ये चाहिए, फास्ट चाहिए, बट स्टिल दे डोंट स्टडी दैट चैप्टर। एक मॉडल बनना इतना आसान नहीं है। आवर्स एंड आवर्स ऑफ रिसर्च चाहिए, आइडेंटिफिकेशन चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है। आप एक मॉडल बनने समझना, right? The study, self study. They don't do it. They just see that it's an interesting profession, there's a lot of glamour inside it. They don't see the hard work. They don't see the panic of this industry. They just see the good part of it. So the problem stands there. So today's generation should know one very important thing, that is, you have to self study. You have to identify. मेरे specific industry में आज आप हर एक जगह देखो मॉडल्स, सिलीगुड़ी में भरे पड़े हुए मॉडल्स, लेकिन प्रोफेशनल जगह में वो कोई काम नहीं आने वाला। आप लैक्मे फैशन वीक में जाओ, जो ऑडिशन जाता है उसका फर्स्ट फॉर्म में दे कैन नॉट फिल बिकॉज ऑफ द हाइट। No, that's what I see. Like lots of people below 5 feet of they say themselves they are models. And how is it becoming possible? Yes, so that is a big question. That is a big question, and that is what is killing the profession. Exactly. People, just for their more benefits, they come up and say I'm a model, I'm this, but actually they are being a big harm to the one who is actually deserving it. लोगों की देखने के नजरिया बदल, शायद उनको जो रास्ता दिखा रहे हैं वो भी ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं। कहीं पे गलती, वहीं यहाँ पे तो गलती हो रहा है, कहीं पे गलती है। तो हमारे जो टाइम पे हम जब कर रहे थे, हमारे टाइम मतलब आई एम नॉट so old right now, but still I spent 23 years, means it's a long journey. Right. So in this journey I have experienced so many things. I have seen that I say myself I'm a floppy drive. I started with floppy drive at that point of time. Floppy drive was kind of word which I use generally. Yes, we were floppy drives. So we started from there, and today there are chips. So I've seen a lot of changes in the whole process. Right. So इस प्रोसेस में एक चीज बहुत कांस्टेंट है कि you have to upgrade yourself. Exactly. You need to upgrade. सारे field, you need to upgrade. Even in our field. Any profession. If you are going to stay in that profession, you have to upgrade. अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आप पीछे छूट जाओगे, जमाना आगे चला जाएगा। So ये जो अपग्रेड करने वाला चीज है, कहीं ना कहीं ये मिसिंग है। As I said, everyone wants to be shortcut designers. They're social designers बन गए। Socially they are into this profession, but practically they are not. So that has to come, and I am chasing that only कि like मैं लोगों को वही सिखाने की कोशिश करता हूँ। Or people who are serious about this, they should also come forward and try their level best to to protect this entire circle. In fact उनको भी अपना कुछ योगदान देना चाहिए, मेरे को लगता है। Because we as a industry never function. सही। आपके फोटोग्राफी इंडस्ट्री बोलो, हमारे डिजाइनिंग इंडस्ट्री बोलो,
everybody is just there to fight with each other. We don't have unity within ourselves. That's the main problem. And if we have some unity also, then we can talk to seniors. ऐसे ऑर्गेनाइज करो स्कूल लेवल में, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करो, डिजाइनिंग में आना है तो बच्चे को डिजाइन जाना चाहिए, उसकी वर्कशॉप्स कराओ. अकेला आदमी कितना दूर तक जा सकता है? वही एडुकेट करे, वही फोरम बनाए, वही. तो ये बनेगा नहीं इतना जल्दी, बिकॉज लाइक माइंडेड पीपल्स विल नॉट वर्क. अगर आप मेरे पुराने वेबिनार्स और अगर स्पीचेस भी देखें, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पीपल शुड कम फोर्थ, और एक यूनिटी बनाना पहले बहुत जरूरी है. आई अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग. एंड बगैर यूनिटी का कुछ होगा भी नहीं. आप अकेला किसके पास जाओगे? आप जाओगे वहां से उधर ऑपोजिट साइड में, मिनिस्ट्री विल नॉट, ही इज वन मैन आर्मी, सो ही विल नॉट बी एबल टू डू. 10 लोग जाएगा तो देन दे विल स्टार्ट थिंकिंग, ओके फाइन, आज की यूथ, दो ट्रेडिशनल एजुकेशन इज गुड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, बट ट्रेडिशनल एजुकेशन का फ्यूचर बहुत डार्क है अभी. यू सी, आई मीन टुडेज जनरेशन, देयर इज नो गुड जॉब. Professional education में there are good jobs, whether you go to hotel industry, whether you go to photography, yours designing, being model, or doing makeup, going into events. There's a lot of money out there. There's a career out there. Government is not giving us anything. Right. But उसको करने के लिए बच्चों को education की बहुत ज़रूरत है. आज सबसे flourishing industry है wedding. And this is going to continue for a long. Yeah, people will get. Yeah, wedding will never stop. Yeah, wedding will never stop. तो ये wedding industry को related सब कुछ है. Fashion है, glamour है, photography है. So why not wedding industry should be marketed properly? Right. School colleges में market करना चाहिए. This is one big career. I'm not talking about event management. I'm talking about wedding. Weddings. So there are a lot of things which I as a person, love to do, but single-handed it has become it's very not tiring. Possible. It's not very possible. tiring. Yeah. और आशा करता हूँ आज आपके साथ में मुलाकात हुई है तो आगे भी काफी सारा चीज का रास्ता, हमारा दरवाजा और सब कुछ बिल्कुल. It's collaboration generation right now. अभी का जनरेशन है कोलैबोरेशन. आप जितना कोलैबोरेट करोगे, जितना आप अपने आप दूसरे के साथ कोलैबोरेट करोगे, 1 से 2, 2 से 3. और देखना एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी वर्क को ही ढूंढता है. सही बात, बिल्कुल. मैं अपने प्रोफेशन में क्वालिटी वर्क देना चाहता हूँ, तो मुझे फोटोग्राफी में भी क्वालिटी चाहिए. मुझे म्यूजिक में भी क्वालिटी ही चाहिए. मुझे मेकअप में भी क्वालिटी ही चाहिए. तो वो खोजते रहता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये सारे जो खोजने वाला चीज है, इफ वी कोलैबोरेट, द इंडस्ट्री बिकम्स मोर स्ट्रांग एंड ऑर्गेनाइज्ड. या एग्जैक्टली. ये आने वाले दिनों में तो यही चलने वाला है, कोलैबोरेशन. मुझे लगता है सबको कोलैबोरेट करके ही काम करना है. The Westerns, like they try this like since ages. Collaboration कितना बहुत पहले से चल रहा है. The big companies, they collaborate together. If we talk about like photography, the two big photographers, they collaborate together and work. Yes. और इसका आउटपुट भी तो बहुत स्ट्रांग आता है. हर एक चीज हर एक जन के पास नहीं है. उसके आइडिया, दोनों के डिस्कशन, दोनों ब्रेन्स एक साथ जुड़े तो यू कैन मेक मैजिक. आपने पहले बताया कि आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और काफी सारे चीज मतलब आपके लिए कठिन थे. इनफैक्ट इट वाज नॉट सो इजी टू आपने 20 साल में इतना मशक्कत किया है. इनफैक्ट अपने आप को पूरा कंसंट्रेशन और अपना जितना भी आपका ऊर्जा था सब कुछ आपने, ये ऊर्जा आता कहाँ से आप इतने मोटिवेट होते हो? ये ऊर्जा वर्क से ही आता है. मैं बहुत सिंपल, आई डोंट हैव फ्रेंड्स. आई हैव गिने चुने एक दोस्त होगा, वो भी जब तक वो दोस्ती है फिर बंद. काम में ही इतने हम एंगेज रहते हैं कि दोस्ती. आई वेक अप, आई गो टू ऑफिस, आई कम बैक, आई स्लीप. मेरा एंटरटेनमेंट, मेरा पर्सनल एंटरटेनमेंट काम से आता है. आर्ट इंडस्ट्री में है उनका जीवन शायद ऐसे ही होता है, ऐसा मुझे लगता है. इवन विद अस, वी गेट अप फ्रॉम द बेड, लाइक दिमाग में सब कुछ सेम चीज चलता है. वी कम टू ऑफिस, just work on that, and then there's no personal life. I think when I want to enjoy, when I want to go for खुद की पार्टी, रिलैक्सेशन, तो मैं उसी वर्क को ही लेके जाता हूँ पार्टी करने के लिए, ताकि वर्क कल्चर के साथ साथ पार्टी भी हो जाए. तो हो वर्क कल्चर के साथ पार्टी. सो देयर इज नथिंग. सोशल लाइफ अलग है, जैसे हाथी का दांत दिखाने के लिए अलग है, मेरा भी वैसे ही है. आई एम वेरी डिफरेंट टू पब्लिक, बट आई एम वेरी आइसोलेटेड टू माई वर्क.
I'll have to spend more and more time in my personal work, and I try to adapt a lot of new things and learn a lot of new things so that I can teach my students. वही मेरे लिए एक मोटिवेशन आता है सेल्फ, ताकि नया कुछ कर लूँ, नया कुछ कर लूँ, नया कुछ. हमने शुरू किया छत से, अभी के बच्चे लैक्मी फैशन वीक जाते हैं. सो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मेनी चिल्ड्रन, many models, many people I know. So it was not an easy task to go in Lakme Fashion Week. एक छत से शुरू करके लैक्मी फैशन वीक तक जाना was खाली लैक्मी फैशन वीक भी नहीं, it's Bangalore Fashion Week, India Runway Week, there are a lot of fashion weeks, and वो भी क्वालिटी वर्क. सही बात. जिसका सपना उस जगह में जाना है, उस जगह में पहुंचाना was kind of not struggle. I enjoyed going there. I made my track cribbling. इस चीज के लिए तो मैं इनफैक्ट ताली बजाना चाहूँगा. very nice and hats off to you. इतना एनर्जी आप, मतलब इनफैक्ट मुझे भी ऐसे लोग पसंद हैं जो अपने काम में अपना 100% से भी ज्यादा दे देते हैं, कोशिश करते हैं. मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि 24 घंटे ही क्यों होता है ऐसा. वो वही जब फैशन शोज होता है, स्कूल के कॉलेज के एनुअल शोज या कोई भी फैशन वीक्स जिसमें मैं इन्वॉल्व रहता हूँ या मेरा इम्पोर्टेंस है वहाँ पे, तो आई सी दैट सबसे पहले पहुँचता हूँ मैं, और सबसे लास्ट 2 दिन बाद मैं ही सबसे लास्ट घर जाता हूँ, या फिर जाता भी नहीं, वहीं पे रुक जाता हूँ, ताकि मेरे वजह से किसी को नुकसान ना होना, मेरे वजह से किसी का टाइम ना स्पेंड हो जाए. एंड आई एंजॉय दैट कंप्लीटली. आई मीन आई गेट गूज बम्स एट टाइम्स व्हेन आई इमेजिन अबाउट अ फैशन शो. देयर इज सो मच थिंग्स आउट देयर कि आप सुबह से लेके रात तक कितने चीज कंटिन्यूअसली चेंजेस होते लास्ट में वो ऑडियंस आके वाह करके चले जाते हैं. सही बात है. सो दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ एनर्जी अगेन, यू नो, नेक्स्ट शो तो इससे बड़ा करना है, नेक्स्ट इवेंट इससे और बेटर करना है, ऑर्गेनाइज जहाँ पे मैंने वीक होल्स रखा है उसको ठीक करना है. सो इट happened this way. So you said about energy, this is my energy. How do you find yourself as a son? See, as I said, I'm very shy. I lost my father a long time back. It's been almost ages now. My mother is a normal housewife. She used to be, now she's grown old. I am the second child in my family. So my brother is into business. My sister is into education. So I was an off-track person. मेरा dimension was completely different. So उन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता था पहले, क्या करता है. So they were feeling करता क्या सारा दिन, तो कभी पार्टी, कभी शो, कभी ये इसको सर क्यों बोलता है लोग. Why is he sir? सही बात भी तो है, मतलब लोग को समझ अभी भी कहाँ, अभी उन लोग फिर भी थोड़ा सा अपने आप को इस ट्रैक में डाल दिया है कि, लेकिन उस टाइम में इट वाज कंप्लीटली डिजास्टर. आई मीन आई नेवर यूज्ड टू गेट दैट अमाउंट ऑफ ऑनर इन माय हाउस कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसके लिए पेड होना, कि लाइक यू नो घर में यू नो आई डिड दिस वन. सो क्योंकि दे डिडंट बिलोंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, सो समहाउ दे कुडंट कनेक्ट. ग्रेजुअली जब कभी शोज में आया, फ्यूचर में सभी शोज में आया, पहले के शोज में उन लोग देखने आया, तो वहाँ पे जब इतने सारे लोग मेरे को वाह करने लगे, तब रियलाइज हुआ कि शायद कुछ कर रहा है, कुछ तो हो रहा है. फिर उन लोगों ने उसको अडेप्ट कर लिया. अभी भी उन लोग खुश नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ. सो दिस समथिंग लाइक दैट, बिकॉज एंड आई नेवर वेंट देयर एंड नो काइंड ऑफ मेड देम अंडरस्टैंड ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. अभी तो देखते सोशल मीडिया देखते दे हैव अंडरस्टूड, ओके फाइन, दिस इज वन प्रोफेशन. बिकॉज जो एकेडमिक्स बिलोंग करते हैं ना, ट्रेडिशनल एकेडमी, उन लोगों को ये सब करियर अच्छा नहीं लगता है, जनरली अच्छा नहीं लगता. उन लोगों को लगता है पढ़ाई इज ओनली वन मीडियम. Either you do graduation, you do maths, you do M.Tech कर लो, B.Tech कर लो, आगे जाओ उसी लाइन में, इंजीनियरिंग कर लो, वही सब प्रोफेशन है. बाकी के तो प्रोफेशन उतना अच्छा नहीं है. लेकिन अभी थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ है. अभी मैं इसीलिए मैं डॉक्टर्स को भी देखता हूँ हमारे इंस्टीट्यूशन में आके, मेरा वाइफ डिज़ाइनिंग करना चाहता है, मेरा ये इंटीरियर करना चाहता है. तो इट्स चेंजिंग नाउ, बट फ्यू ईयर्स बैक ऑल्सो इट वॉज एज यूजुअल. आई मीन देयर वर लॉट ऑफ differences in opinion in the audience. सही बात है. मैं भी डिजाइनिंग में पहले अपने आप को इन्वॉल्व किया था. लाइक लॉन्ग बैक आई स्टार्टेड माय करियर विद टीचिंग आउट हियर. ओके. एंड देन जैसे कि आप में आर्ट अंदर में था बचपन से ही,
मुझ में भी ऐसे ही था. I used to like sketch, I used to make some pencil drawing, etc. and etc. डिजाइनिंग का कंपनी हमने यहाँ पे सेटअप किया. तो आपने जैसे बताया कि यहाँ पे उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं, राइट? देन आई फाउंड कि इससे लंबा कुछ नहीं होने वाला है. Till 2011 I was into teaching. And अच्छा. after that, gradually after... वो प्रोफेशन जो इंटरेस्ट है वो तो कहीं ना कहीं पीछा कर रहा होगा आपका. No, even I like teaching. अभी भी पसंद है. शायद वो मेरे ब्लड में ही है. My dad was a teacher. लेकिन उसके बाद में आपने बताया ना, कभी कभी कुछ अचानक से हो जाता है. This is how it happened. Yeah. तो मेरे कोर्स ऑफ लाइफ में मैं वही एक बार जब मैं एक एग्जांपल दिया था ना कि लाइक मैं एक एग्जामिनेशन देने गया कलकत्ता में एंड आई वाज सिलेक्टेड आल्सो. तो there was one beautiful this story I should say because you know this is one old story and a very interesting one. Yes. So I'm talking about most probably 97 or 98. So I went for this examination. I was cleared with the examination. 200 बच्चे को select किया होगा and then from there there was personal interview. Okay. तो 100 बच्चों का एक पैनल ऑफ जूरी था. 100 बच्चों का दूसरा पैनल. मेरा था ग्रुप ए या बी, आई डोंट रिमेम्बर स्टिल नाउ. मेरा नंबर था 98 या 97 ऐसे कुछ था. तो वहाँ पे क्या था कि दूसरा ग्रुप का था, उन लोगों का सबका एग्जामिनेशन हो गया था. अच्छा. एंड फिर सारे वो जो जूरी मेंबर्स थे वो इस रूम में आ गए. अच्छा. मैं जिस रूम में जाने वाला था तो उस रूम में देयर वर ऑलमोस्ट 16-17 jury members. Long panel Okay. jury members all together. Right. And only one chair and one psychiatrist sitting next to you. And just when they entered, I seen one lady. She was so beautiful, dark complexion, and and she was wearing a big bindi. I still remember she was going to the washroom. I just wondered who she is. And I was going back with her and I was following her, then it should not look good. So I came back and then my turn was there. I entered and I was getting nervous now. It was a long panel of jury members. So the interview started and the first thing which she said me, one designer, I remember, she was Mona Pali. Okay. I think Pali ma'am was there. She asked me, can you draw a straight line? I said, yeah, I can. I did the straight line. And the next, the lady who was going to the washroom, she asked me, where do you stay, Kuntanil? I said, I stay in the hills. Where? Siliguri. Bolo, that's a nice place. I mean, so Kuntanil, do you run? मैंने उन्होंने हिंदी में बंगाली में पूछा कि आपको पहाड़ चलना आता है, ट्रेकिंग करना आता है? So I said, no ma'am, I don't love trekking because it's quite risky. So she said me one thing only, ki like, do you think this profession is so easy? This is more risk in this whole industry. It's so much risky that if you come into this, it's so risky. So you don't love to go to trekking and you want to come to the designing industry? I'm like, yeah ma'am. So somehow I got deselected at that time. अच्छा. So I said, ma'am, आपको तो सिलीगुड़ी आना ही पड़ेगा कभी ना कभी. Because you love Siliguri. आपको तो सिलीगुड़ी आना ही पड़ेगा मेरे पास. ये तो ठीक नहीं हुआ, रिस्की वाला बात आप तो कह दिए. तो I just got selected after that through some way, but again there was backdooring thing, so I didn't go because I didn't have my father at that time, and there was a lot of amount of money they were charging. So I said, okay, fine, drop the idea. So somehow, as I started doing this fashion modeling on my rooftop, I wanted to connect with designers now. So she was Sharbari Datta ma'am. Okay. So one of the leading designers of West Bengal. Yes. Nationally, she is one of the only leading designer who does menswear. One of the best ones. Big name, yeah. Big name. So at that time, they were landline. So I tried a lot of times, but no way I could connect her. But how things change, it happened in the year 2004, I remember. I straight away said, I have to go there. I cannot do all this calling. Enough of it, enough. I have to need to go there and talk to her. So I just went there, knocked at the door, and her daughter-in-law comes out and says, she comes out and says, you call me, na?
wait, I'll just tell Ma to come inside. So she had come and I met her, and from then I don't know what had happened. She has become a kind of second mother to me. Oh my God. And from then she started coming, and now whenever she comes in Siliguri, she stays in my house most of the times. So it's been so many years from her, the ones who have taken my interview. From Right, there, yeah, she became my family member, almost my family. I went to so many places. I went to so many places with her as a son. She used to introduce me as he's my second son and all. So I took care about, because she was a bit senior lady. So we went so many places. So she taught me a lot of things about how designing and how to connect with audience and all. So those celebrities, I started getting in touch with them, one by the next by the next. So there are endless stories about connecting only my professional peoples. I didn't connect with Bollywood. I didn't connect with Tollywood people. I didn't have interest of connecting with them. I only wanted to connect with my people, my interests, my designing people. So from Siliguri, a small house in Siliguri, to all these connections, it took a long time. And I enjoyed that. One after the other after the next to next, back. And this is important, in fact, whatever you do, you have to enjoy that. Enjoy it. Yes. And if you can't enjoy somehow the other way, you're doing it forcibly. किसी दूसरे की वजह से आप कर रहे हो. I did it by my own interest. And why I did it? Because if I get it, I can bring it to my audience. My students, my hometown. I can bring them. So gradually these designers had come endlessly in Siliguri, and people of Siliguri know what designers are right now. Whether you say BB Russell ma'am, whether you say Sharburi Datta ma'am, whether you say there are many other designers those who had come across, and even senior models like Noinika Chatterjee. She's one of the senior most model of our country, a supermodel still now. She also comes to Siliguri, and just because of me. So that is what I connected in my whole journey, bringing them to Siliguri. It's not always that you have to go to metros. Metros में तो कर ही रहा है, लोग कर ही रहे हैं. Why can't I do it in my hometown? And I did it with quality. I maintained their standards. I did shows of their standards. ऐसे नहीं कि कहीं पे भी उनको अपना फायदा के लिए घुसा दिया. I can assume like how hard it would have been long back. It was very challenging. Yeah, it was challenging because even I belong to the same kind of industry, and for me, suddenly leaving the teaching job and then coming to this industry, that too unorganized. And that too wedding photography. Like wedding photography still it's a taboo. It's a taboo. Biyer barite chhobi tule. This kind of statements people give, but then we are happy. To educate. Yes, we are happy that in last 7-8 years, like we have come a long way and we have done wonderfully well. Wonderful jobs. I mean, wedding industry, as I said, एक वही इंडस्ट्री है जिसमें सब कुछ है. बिल्कुल सब कुछ है. डिजाइनिंग से लेके फोटोग्राफी से लेके इंडस्ट्री के सब कुछ उसी प्रोफेशन में आता है. तो इट्स गुड. आई मीन हाउ यू आर वर्किंग, हाउ आई एम वर्किंग. This way, if all the whole industry comes up, I think the industry of Siliguri will get benefits, rewards, because professional education से इन सब प्रोफेशन में आना बहुत इजी हो जाता है. और खाली आप आना चाहते हो विदाउट एनी फॉर्मल नॉलेज और विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज, इट बिकम्स डिफिकल्ट. आपको बहुत सारा साल, जैसे मेरा लगा, बहुत साल मैंने लग के इसको तैयार करके मैं आज इस जगह में हूँ. अभी भी लगता है कुछ नहीं हासिल किया, लेकिन अब एक साल में तो ये नहीं बन सकता. एक साल में बनना बहुत डिफिकल्ट था. So I can say that you are Saurav Ganguly of fashion industry in Siliguri. Yeah, because how Saurav Ganguly created the Indian cricket team, we cannot deny that. Yes, it was North Bengal. Yeah, North Bengal was completely zero. Yes, zero. But today it is at least people understand. So इस नेटवर्क बिल्डिंग और इस स्ट्रगल और इतना डेडिकेशन के पीछे आपका तो टाइम लगा है. बिल्कुल. अब समय बिल्कुल अपने पास तो बचता नहीं है. बिल्कुल. कैसे परिवार को समझाते हैं कि आप इवन यू आर मैरिड, राइट? Yeah, as you said, like so your wife must have been very supportive, I guess. She's also of this industry, so becomes easier. I made it to my point कि मुझे शादी करना है तो हमारे इंडस्ट्री, बिकॉज एक तो मेरा इंडस्ट्री में इतने सारे फीमेल्स आसपास रहते हैं, गुड लुकिंग मैन वेमेन, सब कुछ है. और दूसरी इंडस्ट्री से प्रेडिक्ट करना, जजमेंट हो जाना बहुत इजी है कि आप
दूर से जजमेंटल कर लो, उसके साथ इसकी ये चक्कर है, affair है, and all this big stories about your life. So I thought, no, I have to bring my wife, choose my wife, someone who is from this industry. So I married to my student only. One of my students. And now gradually she's also a designer. She has showcased in quite some shows, and you know. So she's there busy. must be a love story behind. No I love guess. story. No? Yes, proposal straight away. There was kind of we went for a date, and then suddenly I just offered her one thing: can you get married with me? That's How all. sweet. And my that time father-in-law was kind of say, no, ये तो different profession है, वो selecting from some NRIs and all, because her elder sister is in America, might be. Okay. So they wanted someone like that. So she was also adamant, and I was also saying, if I get married, just tell your father. And then within 10 days we got engaged, and but our marriage was scheduled for 6 months later. Acha. So I said, see, we are not going to go out anywhere. Only we will go out once we are married, because I don't want to hurt your father, because you know he comes from a different background, and suddenly he'll see that, you know, we are going out, and he'll take it in a different way. Right. So though we were engaged in June or July, and we got married in January next year. Acha. So now after that, you know, I said in the very first day that, you know, see, if you want to come up in your normal sari look and being a housewife, just stay there. And the day when you just wake up and say, I want to wear my trousers and go to the office, nobody's going to stop you. Right. Because you make it a habit then. Exactly. So she did what I said, and she jumped into trousers and to the office. Yes. And that's how she started You working. have to be like what you are basically. You don't have to change for others. No, Yes. no, that's more important, because I wanted my wife to be a part of my whole industry. I didn't want to be get a normal housewife cooking food for me and making things. I didn't want like that. Right. Because there are so many challenges in our family. I didn't want to get into all those controversies. Yes, no, I just wanted her to come out of it and, you know, be as a normal colleague to me, working for my organization or doing something related to that. So she's immediately, helping you in no, she NFD? started up with a boutique. Okay. She started up with a collection. She does a lot of designing here and there, and does fashion weeks also. She runs her own production line, that's all. So that's how she is connected. So there's no controversy now, because wherever I am going, she's also assisting me, and you know, we have she the same understands common you. friends. Yes, she understands Yeah. your profession. Very she understands you nicely. Other than running your institution, right? What else do you do to, like, you know, make yourself happy, or that Events. I just because see, in a year, if I do 3 events also, those 3 events take at least minimum of 2 months of work prior to the event date. So I wait for the right event coming across my way and find out that, okay, I should do this one or I shouldn't do this one. Because when you talk about an event, the whole industry has to come into that, you know, whole together. Right. So you need to get a lot of homework done about the whole event, how you're going to manage people, who are the celebrities going to come, who are the models, who are the designers, who are going to assist them, the production team, the light, sound, everybody. So it's a huge investment of time, energy, and connections. I mean, you need to do that. So if I talk about an event, it takes almost 3 months to execute. Yeah. So that amount of time I give, and I do it on my off hours. I mean, when I'm not doing my office hours, I mean, I'm not into designing, I do all these things. So this way we try and figure out. Other than that, it's also related to my parallel profession. So I don't do anything beyond these two. If it's a Sunday also, I see myself going into my laptop and doing something related to stuff, doing this. And if I go to some vacations, that also has to be something with work. I cannot go without work. And that also with my people, along with my family. So I enjoy that way. Right. So it's no personal movement anywhere. My work and my family is clubbed together. Okay. So people say personal life and professional life. Yes, my personal life and professional life is almost blended. There's no differentiation out there. I try to see that, you know, wherever I go, both the things go hand in hand, because I should be happy after all. Exactly. That is more important. Yeah, I should be happy. I cannot go to an isolated mountain. I feel bored and come back again. Right.
एट टाइम्स व्हेन देयर आर लॉट ऑफ वर्क प्रेशर्स, मतलब बहुत फैशन शो का जो 3 महीने से आप प्रिपेयर करके शो खत्म होके तब लगता है कि मैं एक दिन के लिए चला जाऊं बाहर घूमने के लिए मोबाइल बंद करके। जाता भी हूँ तो दूसरे दिन मुझे आता है याद कि मेरा वेरी शॉर्ट स्पैन व्हाई आई एम नॉट वर्किंग। मेरा ऑफिस खुलना है, देयर सो मच ऑफ वर्क देयर, आई शुड रन अराउंड एंड देन आई कम बैक टू वर्क अगेन। सो अभी तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि I went for silence for some time. There's always something going on in my mind. What are your future projections? Like, where do you see yourself? See, these two things are still going on, and I'm carrying on with a lot of interest. And 2-3 things I'm working out. I'm just as इतना साल तक मैंने फैशन डिज़ाइनिंग को, इंटीरियर डिज़ाइनिंग को, मॉडलिंग को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि इमेज कंसल्टेंसी, दिस इज़ वन गुड थिंग विच हैज़ कम अप। मैंने एक चीज़, इससे भी एक स्टोरी है इसके पीछे। इस 20 साल तक, 22 साल तक, 23 साल तक बहुत लोगों ने मुझे पूछा व्हाट इज़ योर डेजिग्नेशन। तो आई यूज्ड टू फाइंड व्हाट इज़ माय डेजिग्नेशन एक्चुअली, कि मेरा डेजिग्नेशन है क्या। आई एम नॉट अ डिज़ाइनर, आई एम नॉट अ, व्हाट एम आई। सो whatever was required, I used to write that. I'm a consultant, I'm this, I'm a show director, I'm that, I'm doing all things. So whatever is required, I used to write my designation that. But yes, I found a good thing to use in my designation, which I did inaugurate also last year, was image consultancy, which is the new generation's a new generation career. Because image consultancy is something which is related to upgrading images of anybody. It is not always about models, it is not always about good peoples, it can be anybody. So I am more inclined towards this, because this is the new generation curriculum which people are also taking expertise of those who are into image consultancy. Today industry needs people, because you might have a lot of money, you might have a lot of knowledge in your business, but might be your dressing is not correct, might be your movement is not correct, something is missing in your whole appearance, because ultimately that is also important as what you communicate. So image consultancy is one profession which I am giving my full time right now, because I'm finding people are showing interest to do this profession, because this is having a wide career, because खाली मॉडल्स आपके पास नहीं आ रहे, कॉमन मैन भी आपके पास आ सकता है। सही बात है। आपको, आप वेडिंग में जा सकते हो, जैसे इमेज कंसल्टेंसी में टुडे देयर आर लॉट ऑफ brides and grooms, they need to know what type of dresses what type of costumes, what type of colors they need to put on, which actually suit their skin tone and height, body language, about the occasion, situation. अब मान लो एक वेडिंग आपका, आपने एक डार्क कलर पहना है, और आप लोगों को भी तकलीफ होता होगा व्हेन यू डूइंग वेडिंग फोटोग्राफी। बैकग्राउंड अगर बहुत कलरफुल हो गया तो उसका टोटल image is not going to come perfect, because the background in the foreground is going to get controversy out of the whole story. I remember you asking a question while I just invited you, which color should I wear on the side. Yeah. So that was a very rare question too, and then but then I could relate that you are from a designing background, and because I have to explain this, I didn't explain to you because I know that you will understand these things. So सही बात है, ये सारा चीज बहुत ही आजकल के ज़माने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण वाला बात है कि लाइक इमेज कंसल्टेंसी लोग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्राइड ग्रूम दे जस्ट स्पेंड सो मच ऑन देयर डेकोरेशंस एंड फूड एंड वेन्यू कॉस्ट एंड ऑल। आई से व्हाई आर यू स्पेंडिंग सो मच ऑन दैट? हु इज गोइंग टू कम एंड give a rewards to you after the finish up the wedding? They'll always say this was wrong, that was wrong, this is not there, that you're spending so much on that. Why don't you spend on yourself? Half of the plates, if you spend on yourself, I think you can groom more. And the story which you would make, the photographs you would take, at the end of the day, they just make a beautiful image of it, and 50 years down the line you'll be happy showing that कि आपकी फोटोग्राफ देखो कितना अच्छा फोटोग्राफ्स थे। अभी क्या हो रहा है, लोग जानते नहीं है, जो जिसको जिस तरीके से उनको पजल करना है वो पजल कर देता है, उसके स्टेज वाले उसके बैकड्रॉप को कलरफुल बना देता है, उसके कॉस्ट्यूम के साथ मैच नहीं कर रहे, ज्वेलरी वाले उसको बहुत सारी ज्वेलरी
सेल करके उसको बोलते हैं यू लुकिंग ब्यूटीफुल, बट अल्टीमेटली एवरीबडी इज मेकिंग यू अ क्लाउन. Exactly. So image consultant is very important at that point of time to guide you from step 1 to step 2 to step 3 in gradual. So these are the things which you should wear, these are the things you should not wear. She should talk to the decorators, what's your background, what color combination I'm going to get, because photographers are going to come only on the event day or might be one day prior to that. So coming there, they cannot do any changes. Right. And at the end of the day, you blame them. So that's a wrong thing. So why don't you upgrade your standards? Why don't you change your whole perception? So I did couple of weddings and everybody was so happy. That's kind of, you change the concept of looking into a wedding. So I'm giving my full time to this image consultancy. This is one thing which is going to take a different shape in the coming future within 1 or 2 years from now, because wedding industry is gradually upgraded. Let us not talk about the lockdown. The lockdown is a crisis. It's a crisis. It will vanish after some time. Yes. So again, the entertainment industry, the wedding industry will function. So when you are talking about a wedding industry, you spend a lot of money out there. They don't even recognize कि किस तरीके से पैसा कहाँ पे खर्चा हो रहा है. They just do it. So I make my people stronger in that point कि नहीं, आप अपने ऊपर खर्चा करो. Right. आप अपना ड्रेसेस के, अपने ज्वेलरी के ऊपर, अपने मेकअप के ऊपर, अपना बैकग्राउंड जितना है उतने पे कंसंट्रेट करो, बिकॉज फोटोग्राफ्स इस तरफ आना है, फोटोग्राफ्स उस तरफ कोई नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा. सो यू शुड बी हैप्पी विद योर वेडिंग. सो इफ योर इमेज इज करेक्ट, एवरीथिंग इज करेक्ट. सो दिस इज अ न्यू प्रोफेशन. 20 साल पहले आप एक चैलेंज लिए थे और उस चैलेंज को आपने भली भांति अभी तक उसमें पॉजिटिव रहे हैं, और ये नया चैलेंज है. दिस इज अ न्यू चैलेंज एंड आई एम एंजॉयिंग इट बिकॉज आई एम वेरी because these concepts like even we have been thinking since so long, but then even we wonder how will we make it possible out here, because as you said कि यहाँ पे अभी तक ये समझ नहीं है कि ये भी एक चीज हो सकती है, करियर बन सकता है, एक करियर बन सकता है. सही बात. वेडिंग इमेज कंसल्टेंसी इज one of the best things which is going to come. And nowadays I think you're moreover into weddings and studying weddings. Is it yes, I'm doing a lot of weddings because I have done fashion designing, I have done interior designing, I have done into modeling, because ये हो चुका बहुत साल एक ही चीजों के लिए चलना. It's in your blood now. So wedding is coming. I'm not into wedding event management. I'm not doing that. So that's a wrong thing which I've said. Right. I'm doing wedding image consultancy. I'm going to design for the whole setup of the venue, how things, the colors, and how products can be utilized, the props can be utilized, the groom and the bride, the backdrop. Only this much. I'm not going to execute that. Execute तो जो events के जो event planners है वो करेंगे. I am more into consulting, grooming them up, sitting with them 6 months ahead of their wedding कि हमें ऐसा कुछ करना है. क्योंकि अभी जो कुछ चलता है वो गूगल के ऊपर में चलता है कि ये चाहिए, just immediately copy that. It get messed. Because वो बहुत गलत है. क्योंकि आप कॉपी तो अलग चीज को कर सकते हो, लेकिन आपके ऊपर कैसे कॉपी चीज कर सकते हो. आप सब्यसाची का लहंगा कैसे कॉपी कर सकते हो? आपकी बॉडी उसको परमिट नहीं करता. आपके बजट उतना नहीं है, आपको समझना पड़ेगा. सो लोग आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा. तो इफ यू हायर एन इमेज कंसल्टेंट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स गेट ऑर्गेनाइज्ड. आपकी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज होगा, आपकी कॉस्ट्यूम ऑर्गेनाइज होगा, आपकी बैकड्रॉप ऑर्गेनाइज होगा, आपकी लुक ऑर्गेनाइज होगा. बिकॉज वेडिंग हैज बिकम बिगर नाउ. अब वही ऐसा नहीं है कि शादी एक दिन का फंक्शन है, अब 2-3 इवेंट्स होता है. तो हर एक इवेंट्स में आप अपने आप को अगर चेंज करते हो, लुक चेंज करते हो, तो वो बहुत एक आपका जो फ्यूचर में आप अपने फोटोग्राफ्स देखोगे उसमें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ अच्छा दिखेगा. दो दिस इज वन वेरी सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करता हूँ कि लाइक आप लेडीज दे से कि दिस इज अ रिचुअल, मेहंदी, jewelry, all girls are fascinated with, and for fascination what they do is just they put mehendi from here to this much. जितना बड़ा मेहंदी उतना ही उन लोग लगता है कि they're just making it look bigger and brighter, but they forget that at one point of time this whole mehendi which you're putting on in your hand and the jewelries when you're putting on top of it, they're just getting just messed up. ना jewelry का look आता है,
ना मेहंदी का लुक आता सही है। बात। मेहंदी तो इतने करने की चीज है, व्हाई डोंट यू डू करीब दिस? से स्टडी किया है आपने, आई कैन Because the photographers get confused. सही What I'm going to take? Right. Because the mehendi and the jewelry are getting clubbed together, and something new is coming, which is not good. So we need to teach people. It is in our ritual, but you made it this big. So we need to come short of आप it. बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पहले से ही कि वी नीड टू टीच पीपल, Yes. दिस इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, एंड कहीं ना कहीं हमने ही अपना काम नहीं किया है। मैं बार बार हमेशा अपने शो में मैं कहता हूँ कि मे बी द फोटोग्राफर्स हु हैव बीन वर्किंग सिंस सो लॉन्ग, और people like you and people who have been engaged into fashion industry, उन्होंने अपना काम नहीं किया है लोगों को टीच करने का, लोगों को बताने का। आहिस्ता आहिस्ता होगा ये तो। मैंने वेडिंग का जो इमेज कंसल्टेंसी है, आई स्टार्टेड 2 years बैक। आई मीन स्टार्टेड किया 2018 में, आई लॉन्च्ड इट 2018 या हाँ 2018 आई लॉन्च्ड इट। बट येस, आई वाज वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट टू टेक एंड व्हाट नॉट टू टेक, बिकॉज सब ये चीज को अभी इतना जल्दी नहीं ले पाएगा, बिकॉज जो लाइक माइंडेड पीपल्स है वो आपके ऊपर छोड़ सकता है, लेकिन जो लाइक माइंडेड नहीं है वो अभी भी ये चीज समझ नहीं पा रहा है कि why would I invest extra penny on the image consultant, why would I do that? डिजाइनर्स तो है, डिजाइनर्स है, मैं बुटीक में चला जाऊंगा, मैं ब्राइडल कपड़े खरीद लूंगा, ज्वेलरीज है, मैं उसको क्यों पैसा दूं? लेकिन ये छोटा चीज बहुत फायदेमंद है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलेगा, बिकॉज दिस इज वन थिंग विच इज गोइंग टू मेक अ बिग इम्पैक्ट इन द ओवरऑल लुक ऑफ अ वेडिंग. So this is one thing which I'm working on, and every day it's a new challenge for me. I do one wedding and I feel I'm done with 6 months now, because 6 months lag jata hai ek wedding because ko that plan you are karne not doing for earning money, that No, you are I'm doing it for your, at least at now I'm doing it for personal satisfaction and gaining knowledge. that is more important. Yes. And of course ऐसे अगर हम कुछ काम करते हैं तो इसमें सक्सेस मिलना ही है, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, आई एम होपफुल. एंड फैशन 20 साल पहले क्या था? कुछ नहीं था. आप सब डिजाइनर्स बन रहे हैं, आप सब मॉडल्स बन रहे हैं. जो छत से शुरू हुआ, आप देखो सबके पास डीपी में आई एम अ मॉडल, आई एम अ सुपर मॉडल, राइट? लव माय जॉब, हैशटैग, सो मेनी थिंग्स दे विल जस्ट पुट, एंड आई फील पिटी, oh I didn't do anything. Similarly, this profession will also take its shape, because ये होना ही है. Wedding industry is never going to die. So people will definitely take this one as a treatment to their wedding also. Yes. So image consultancy. Slowly we have to inject it. Slowly. It is getting. Yes. It is. I already did 5 or 6 weddings as of now. Wonderful. So within last 2 years, 5 or 6 is not a small amount of time, and it takes a lot of. पहले तो लोगों को समझाने में टाइम लगता है, उसको उसका जो कंफर्ट जोन है उससे निकलना बहुत मेहनत वाला बात है, बिकॉज ट्रेडिशनल वैल्यूज तो हम छोड़ नहीं सकते हो. और ट्रेडिशनल वैल्यूज को निकाल के इमेज को पुट करना इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, बिकॉज दोनों ऑपोजिट चीज है. ट्रेडिशंस ही है, वो मेहंदी करेगा ही, लेकिन मुझे उसको स्टाइलिश वर्जन में करना है, कुछ ऐसे तरीके से जो दिखने में अच्छा स्मार्ट लगे. आप फ्यूचर में उसको रिग्रेट ना करो. तो उसको चेंज करने में, उसकी साइकोलॉजी चेंज करने में बहुत कन्विंसिंग लगता है. तो वो 6 महीना तो आराम से लग जाता है एक वेडिंग. आपके साथ बात करके यही पता चलता है कि आप बहुत ही मेहनती हैं, विजनरी हैं, और you will surely excel in your new venture. Thank you. Yeah, we together, I mean you as a team, we are working for one objective of making people look good. Your photography, your wedding photography, are you doing it for yourself? No, you're doing for somebody else. Yes. आप जाके वहाँ पे डिक्टेट तो लास्ट मोमेंट में क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो. लेकिन कंप्लेन आपके ऊपर आता है, आपने ठीक नहीं किया, वो कैसे हो गया. So we are not taking celebrities' photograph. Right. We are taking common man's photograph and making them celebrities. So this is quite challenging. This is quite challenging. हमें मिलके इसको तैयार करना है. हमें, मेरे पास कभी कोई आता है कि you want to take a good photograph, so we would just discuss कि like you can consult them, because together a product comes out nice. My अकेले का इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो सकता है. मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, फोटोग्राफर ठीक नहीं है, तो फिर क्या होगा? तब भी कुछ नहीं होने वाला. तो इट इज अ टीम वर्क. सो दिस इज अ न्यू डे, न्यू ओपनिंग. या इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू ओपनिंग. आई थिंक सिलीगुड़ी, नॉट बंगाल, विल टेक दिस वन वेरी सीरियसली इन कमिंग टाइम्स, बिकॉज अभी तो जस्ट इसका इंसेप्शन ही हुआ है. आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस हो ही जाएगा.
बिल्कुल चेंज हो और इसमें आप काफी आगे बढ़े, साथ साथ में आपके साथ नॉर्थ बंगाल भी ग्रो करे और बहुत हम लोग लोग भी ग्रो एसोसिएटेड हो करें, जाए। बहुत लोग एसोसिएट, उनको भी काम मिले। हमारी तरफ से यही कामना है। Thank you और so आज much. बात करके बहुत ही अच्छा लगा। Thank you. थैंक यू Thank सो you मच so फॉर much. कमिंग टू दिस शो। Thank you.